Namaste. Hello again. Effects of Eye, episode 4. Last episode, in the morning itself today, we saw कि जो पार्ट्स की चीज़ होती है वो कैसे पढ़ते हैं. मतलब हम तो जैसे भी पढ़ते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, किताब क्या करती है और हमारे आई मसल क्या करती है और लेंस क्या करता है एंड डैश 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 डैश. What happens when we want to see nearby objects? Then we ended कि नॉर्मल इंसान को तो ये सब चीज़ें let's jot it down in short. We have a book. Oh, it looks like a book, and we are very close to it. The eye is very close to it. Okay. Second point is the. This is just the gist of seeing close. Okay. So the eye and the book are close. That starts the topic. Then we said the lens has to be fat. Then we said the focal length has to be very small. Then we said that the power of the lens has to be very high. Then we said that convergence has to be high. So basically, this was the gist of the third episode that we did. Close object, fat, and oh, what happened to the ciliary muscles? Then we had the ciliary muscles were very, very tight. Okay, convergence is high, ciliary muscles are tight, power is high, focal length is less. So this is what the gist of the third episode was. Fine. Let's go ahead now. अब हमें आगे करना क्या था कि कुछ लोगों को क्यों नहीं रीड कर पाते हैं एंड उनमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है उनके आईज में या कहीं पे भी. व्हाट हैपेंस, व्हाई दे आर नॉट एबल टू रीड इट. let's first understand that. Okay, first of all, the name. When you cannot read or when you cannot see the close by object, that you can call it a disease or a malfunction, and that malfunction or a disease is called hypermetropia. And it is also known as far sightedness. I will go wrong 5 times in a video when I say this. When I combine both the defects of the eye and I'm doing a common video in the end, I am sure I'll make 3 mistakes, 5 mistakes. So be very sure of the names. I have a problem. I hope nobody else in this world has this memory problem of what hypermetropia is. Okay, so hypermetropia or farsightedness. Farsightedness से पता क्या चल रहा है? साफ साफ पता चल रहा है कि दूर की चीज we can see. Anything which is far away, sightedness. वो हमें दूर की चीज we are seeing. That means what? That means पास की चीज we can't see. Nearby object we can't see. So simple. That is what is far sightedness. अब इसको भी बच्चे गलत गलत लिख देते हैं. फार साइटेडनेस को लिख देंगे कि दूर का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं, कुछ भी बोल देते. So just be very very logical about it. फार साइटेड, जो दूर का देख पाए, मतलब जो पास का ना देख पाए. क्लोज बाय का, नियर बाय का नहीं देख पाए. Okay, and the technical name of this malfunctioning or this disease is hypermetropia. So all this holds true for hypermetropia. So you've just named it as of now.
Now let's see the reason why we can't see. Why we can't see the book or read the phone. We have to do like this. I have to read the newspaper like this. If I don't have my specs, I can't see my phone. तो ये क्या हो रहा है? If you remember, the primary I rubbed it. The primary condition of seeing properly, the close thing was the lens should be fat. Oh, I'll have to write it lens. Primary condition था nearby के लिए condition था, let's not rub it this time. Fat lens, focal length small, power high, and the muscles very tight. Right? Okay. अब अगर हमें पास का नहीं दिख रहा है, if I can't see nearby thing, obviously what is happening? None of them are happening. तभी तो नहीं दिख रहा है. They are all related. अगर ये सब है तो we can see. Now if I say I can't see, I cannot see or read the phone. That means none of them is happening. That means what? The lens has become thin. That means the focal length has increased. That's why I can't see. Or I can say the power of the lens has reduced. Or I can say that the muscles got too relaxed. बहुत उनको आराम करने की आदत हो गई. Just the opposite of we can see like this. And why we can't see is because the same things are not happening. So that means if I write it down nicely, lens cannot become thick. इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है. हमें पढ़ने के लिए क्या चाहिए? फैट लेंस. एंड फॉर सम रीजन आवर लेंस इज नॉट एबल टू बिकम थिक. वो पतला का पतला ही रह जाता है. जब पतला का पतला रह जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी. पतला का पतला रहने की वजह से उसकी मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, से ढीली ढीली सी. एंड we will not be able to read the things. Okay, so we've understood the gist of why we cannot see, and when we can, why can we see nearby objects? So everything revolved around the lens being thin or the muscles being too relaxed. So there has to be reason कि ये भाई पतला क्यों हो गया या मसल को इतनी आलस की क्या आदत हो गई. Why are they so relaxed? Okay, we'll understand why this happens. This is what happens when we can't see. Now, why does this happen? Let's see why does this happen. So I'll write it just again कि अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया है, सब कुछ नहीं लिख रही हूँ. If I have hypermetropia, then my lens is thin and my muscle is highly relaxed. It's not tensed at all. Now there can be many reasons for this. The lens remaining thin or the muscle being very relaxed and weak. We can just take it very casually from the day-to-day life also. If we don't exercise, if I don't exercise, then what happens? Do we have muscles, the strong touching muscles? No, we don't have. When do the muscles build up? When they exercise. Exercise means what? They relax, they strain. They relax, they strain. They relax, they strain. But if this is not happening, if you are not able to give the exercise to the muscle, आप उसको बार बार रिलैक्स और बार बार स्ट्रेन नहीं कर रहे हो,
become weak. Weak matlab it will become readily. So we can say the first reason is because of lack of exercise of muscles. एक्सरसाइज क्या है मसल की? आई मसल की क्या एक्सरसाइज है? रेगुलर रिलैक्स एंड स्ट्रेन नॉट हैपनिंग. उसको बार बार हम रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, बार बार हम स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, बार बार रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, बार बार स्ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मसल वीक हो जाती है. इट डजंट रिमेन स्ट्रांग, इट बिकम्स. It is also called lazy eye. When you are, it just is also called lazy eye. It doesn't want to read. Okay. The second reason can be some nutritional disorders. Nutritional, you know that eye lens is made up of lens needs, eye lens is made up of cells. All cells need nutrition, they need proteins, they need vitamins, everything they need. They're living objects. So if they don't get enough nutrition, then also they become non-functional. Now, what was the primary property of eye lens? The eye lens was supposed to be very, very flexible. Remember? हमने कहा था इट इज़ मेड ऑफ जेली राइट मटीरियल एंड इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. आप उसको जो चाहे कर सकते हो, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो. अब बेचारे के पास अगर खाना ही नहीं है तो हो सकता है वो एक स्टेट में आके रुक ही जाए. वो इट लूजेज इट्स flexibility. If I don't exercise, what will happen? Then if I want to bend back, I'll not be able to bend. If I want to bend down too much, I'll not be able to bend. I'll become stiff. So the nutritional disorders can lead to something known as stiffness of lens. Stiffness of lens means that it is not able to change shape. What do we require here? We require thin lens. So the lens is not able to become thick. अगर आप उसको थिक बनाना चाहते हो वो थिक नहीं होएगा. अगर आप उसको थिन बनाना चाहते हो वो थिन नहीं होगा. वो जहाँ है वो वहीं अटका है. Because of lack of exercise, it becomes stiff, it loses its flexibility, and जो वो जहाँ है वहीं रह जाता है. मतलब वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होएगा. if you want बहुत ज़्यादा मोटा होना है वो भी नहीं होएगा. अब अगर मोटा नहीं हुआ तो we'll get hypometropia. मोटा नहीं हुआ मतलब पतला है तो मतलब hypometropia हो जाएगा. हमें नहीं दिखेगा पास की चीज़. Then next thing can be deposition of certain materials. This is usually age related on lens. Imagine a कांच का surface, okay, a कांच का a window. Now with time, suppose you don't clean it regularly, there will be a layer of dust that will happen. There will be a layer of dust. It will harden it up also. Layer of dust is a wrong word because it relates to a different disease altogether. Let's forget layer of dust. If it is there and it is there for years, it will just harden up. There will be some hard deposits happening on inside it, outside it, due to aging, and it will become. It's not that the nutrition is less, but with aging, it will become stiff again. The net result is that it is becoming stiff again. Again stiff हो गया, not able to thicken up, not able to thicken up होगा तो मत पढ़ो, नहीं पढ़ सकते. Right. Then the next, I'll just write it down right now.
but this explanation I'll come little later. The explanation, the reason is, if the eyeball is too small. Now this is normally by birth. This is does not happen due to any nutritional or हमारे habits की वजह से. This is usually by birth. This explanation we'll do later. But these are the various reasons why a person can get hypermetropia, or why he can't read clearly, or why the lens does not become thin, or why the lens remains thin, or the muscles remain relaxed. They don't want to work. They cannot lift heavy objects. Okay. Now let's see क्या हुआ. Let's see by now understand by diagrams कि पतले होने से हुआ क्या. Diagrammatically let's understand कि पतले होने से क्या हुआ. Theoretically तो हमने समझ लिया. डायग्राम से भी तो समझ आना चाहिए ना कि क्या हुआ अगर पतला हो गया. तो पतला is good. See, I'm so thin. I'm so thin, so it's good. ये तो कहने प्रॉब्लम है. मुझे भी डॉक्टर्स कहते हैं प्रॉब्लम है पतले हो. नहीं. So what is the problem in remaining thin when it comes to hypermetropia? Let's see. First we'll draw a normal eye reading a book. So what should happen in the normal eye? We'll have 3-4 diagrams. I'm making space for it. Enough space for it. I want them one below the other. I'll make it a little strong. You can just zoom all of them together and then see. Okay. So the thing is, I'm reading a book. This is reading a book. The rays from here are highly diverging. I'm sorry. The rays from here are highly diverging. The eye is very close to the book. The lens is very thick. It is converging the light on the retina. Is this fine? No problem, we've discussed. This is close by object. This is thick lens. Please zoom it and see it nicely because I'll have to write small because I want 4 diagrams coming here. This will be very tight muscles. And this is, so I'll write tight muscles. And I'll write convergence on retina, which means clear vision. Everything. This is happening to a normal person who has no hypermetropia, who has no problem with the eye. This is what is happening with it. Done. Now let's see some person, for the 3-4 reasons that we had written down, उसका लेंस मोटा ही नहीं हो पा रहा है. कितना भी वो कोशिश कर ले वो मोटा ही नहीं हो पा रहा है. वो पतला का पतला ही रह रहा है. Now let's see what will be the changes that will happen. I'll add one more thing here. Here the actually बार-बार वही चीज रिपीट हो रही है. The convergence is high and the convergence is high. Now I'm taking a person with defect of hypermetropia. Means can't read. This is this person. So he's trying to hold the book. The same highly diverging rays are coming here. Right? Diverging rays. The same eye is there. But now the difference is
the lens is thin. That is the difference. But now, because of the defect in the eye, the lens has become thinner. And the moment the lens has become thinner, the muscle has become free. It has become relaxed. देखो यहाँ कितना टाइट टाइट मैंने बनाया है और यहाँ पे the muscle is relaxed. So this is the same close by object, but here what has happened is, अब we know that this lens is not strong. ये कन्वर्ज कर ही नहीं पाता है, वो आराम आराम से जाने देता है, बहुत दूर जाके कन्वर्ज होती है. So what will happen? The convergence will happen, of course. Convergence will happen. It is a convex lens, but आराम आराम से convergence होने दे रहा है. थोड़ा सा ही दबाव आ रहा है उसको, अच्छे से दबाव आ रहा है. So are these light rays, are they really meeting on retina? Are they able to meet on retina? I don't think so. They are not meeting. They are so far apart. If they were allowed to go out, they would meet somewhere here. तो अच्छी इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ हमें अच्छा, यहाँ तो हमें अच्छा दिखाई देगा ही नहीं, because they did not meet on the condition. Clear vision की क्या condition थी? Meet on retina. Are these rays? This is one ray. I'll highlight it. This is another ray. I'm highlighting it. Are they meeting on retina? They have not been able to meet on retina. There's still some far distance apart, which makes the image on the book, whatever we are reading, which makes it unclear. Not the words, the picture, whatever it is, not very clearly visible. Okay, so what should we write for this? So we should write here, close by object to Choro. We know that this is diverging ray because of the close by object. We can see that the lens is thin because of some defect that has happened. हमने खाना ठीक से नहीं खाया, हमने एक्सरसाइज नहीं करवाई आइस को, हमारे को बर्थ से डिफेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया. But the impact is that the lens is thin. It is not thick enough. The muscles are relaxed. Okay. Effect क्या हुआ? The light rays not meeting on retina. अब अगर वो not treating on retina है तो ये क्या हो जाएगा? It will be unclear vision. सिंपल, जब वो मीट ही नहीं कर रही तो विजन इनकम्प्लीट हो जाएगी. और ये क्यों हुआ? क्योंकि द convergence of a thin lens was poor. वो नहीं कन्वर्ज कर पा रहा था, वो नहीं दबा पा रहा था. तो क्या हुआ? वो मीट नहीं हुई तो वो इमेज साफ नहीं आई. अब क्या करें? So this is what is the problem. What happens? This is not the problem. This is actually what happens with the normal eye. This is the problem that happens with a person who is facing this defect. अब पढ़ना तो है, YouTube तो देखना ही है, रील्स तो देखनी है. क्या करें कि we are able to see that clearly. इंसान तो हम भी हैं, 50 साल वाले भी इंसान हैं, उनको भी सब कुछ देखना है. तो now what to do? Let's understand what the problem was. The main problem was that the convergence was very poor. This is the main problem. कि वो बहुत वीक सा रह गया है, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, ऐसे नहीं कर पा रहा, वो धीरे धीरे आराम से जाने देता है. करेक्ट? तो अब सोल्यूशन क्या है? किसी से बाहर से बॉडीगार्ड को बुलाओ, वो क्या कहते हैं उनको, बाउंसर्स को बुलाओ और जोर से थप्पड़ लगाओ और उनको दबा दो. जब हम खुद नहीं कर रहा है कोई, तो कोई क्या करेगा? एक थप्पड़ लगवाओ, बाहर से एफर्ट लगवाओ, जोर से दबाओ और दबा दो लाइट को. लाइट को दबाना ही तो प्रॉब्लम आ रही है. इट इज नॉट एबल टू प्रेस द लाइट. सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन सिंपल वर्ड्स इज, वन सेकेंड, कॉज नहीं,
bring in external convergence by outside help. आँख के अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते. We can't put the bouncer inside the eye and say कि दब जाओ. We can't do that. तो हमें आँख के बाहर ही कुछ करना पड़ेगा जो वो पहले ही दबा दे उसको. ठीक है. Now we know what is a converge. कौन converge करता है? Convex lens. So all we do is, again we have the same diagram. The book. The highly diverging rays. Fine. This was supposed to be the eye with a thin lens. Remember, we still have that problem of thin lens. वो हमारी ठीक नहीं हो गई है. अभी भी हमारा लेंस बहुत थिन है, हमारी मसल बहुत रिलैक्स्ड है. ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हुई है. तो हम क्या करते हैं, इसके बाहर एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं. तो क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस जब एक यहाँ हम लगा देंगे, विच इज नथिंग बट अ स्पेक्स, द चश्मा होता है विच हैज दिस द सेम टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, तो थोड़ा तो यही दबा देता है इसको. आधा काम तो ये वाला लेंस ही कर देगा. ये क्या करेगा, ये जो इतनी ज्यादा डाइवर्जिंग रेस थी उसको थोड़ा सा दबा देगा. देखो, it was going, please see this carefully. Should I make it I'll make lesser things here so that we can see it clearly. These are the diverging rays. This is the eye. This is the thin lens. What we are doing is we are putting an external convex lens which compresses the light a bit. I hope this is a better, clearer diagram. बाकी की फालतू की चीज़ें मैंने हटा दी. So this is an external convex lens which is present in the specs. चश्मे में लगा लेते हैं, वो थोड़ा सा हेल्प कर देता है, वो थोड़ा सा दबा देता है. बाकी दबाने का काम, बाकी कन्वर्जन का काम यही कर लेगा. थोड़ा बहुत तो इसके अंदर कन्वर्जेंस है ना. अगर 100 मार्क्स चाहिए, ये नहीं ला पा रहा है, ये 80 ला रहा है, तो व्हाट दिस डज, ये 20 अपनी तरफ से दे देता है. 20 मार्क्स इसने दे दिए, बाकी की 80 ये खुद ले आएगा. एंड देन इट विल लेट द meeting of rays take place on the retina. What happened? The main thing is this external lens converged it a bit as a help, and the rest of the job was taken care by even the thinner lens. उसको कम ही अपनी एफर्ट यूज़ करनी पड़ी क्योंकि काम भी कम हो गया. देखो, इतना ज़्यादा काम बचा नहीं है, इतना डाइवर्जेंस बचा ही नहीं है. काम कम हो गया तो वो काम कंप्लीट कर सका and the vision became clear here. हुआ क्या इसमें, that this lens, external converging lens, helped the eye lens, the thin eye lens, and helped it converge properly on the retina. This is what happened. Simple. हमारा नहीं था हमारे में दम, हमने क्या एक्स्ट्रा हेल्प हायर कर ली, वो हमारे लिए थोड़ा सा काम कर देगी, बाकी सब काम हम कर लेंगे. So now this problem gets solved. Okay. Yeah. So this hasn't gotten solved. That's it. So now whatever we are reading from here, हमारे इस पे आ रहा है, रेटिना पे आ रहा है, और जब आ रहा है तो हमें दिख रहा है. हमें सिर्फ ये एक्सटर्नल चश्मा पहनना पड़ा. Okay. Now, if this is clear, we'll go ahead in this topic. Okay. This will start dealing with some numericals
or some definitions at least, if not numericals, some definitions of things which happen when we want to see a close by object. Okay, we'll not start with the numericals, formulas, etc. We'll start with certain definitions. Okay. Now, the first definition that you have to understand is a near point. Please understand that I'm talking about a normal eye first. First of all, notice that I'm talking about normal eye. And इसमें I'm talking about something called near point. Now, what is near point? इसको N भी बोल देते हैं. Near point is ideally the doctors and all whatever they have found out कि यहाँ पे अगर इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखें, किस जगह पे ऑब्जेक्ट रखें सो दैट द विजन इज क्लियर. आपने देखा होगा अगर हम इसको ज़्यादा पास ले आते हैं कोई बुक को तो वो ऐसे ऐसे डबल डबल दिखाई देने लगता है, राइट? अगर हम बुक को ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो दिखता ही नहीं अगर छोटा प्रिंट है तो. सो देयर हैज़ टू बी एन आइडियल प्लेस, an ideal distance between the eye and the book where it should be clear. Too close, the words will be blurred. Too far, they'll not be visible because they'll become too small for us. So what is near point in that manner? तो इसकी definition simple हो जाती है. The ideal distance होना चाहिए, too far, too close नहीं होना चाहिए, between the eye and the book so that the vision is clear. Now they've calculated for humans. It is only for humans that this value is valid. They say that if you keep the book at about 25 centimeters from your eye, that is the best place to keep the book. It will not get too strained. You'll be able to read it nicely and clear. It will not be blurred. Nothing will happen. Ideal distance or the near point of the eye of a normal human eye is 25 centimeters. You should typically keep a book 25 centimeters. 25 centimeters कितना होता है अंदाजे से? इतना? How much is 25 centimeters? आधे लोगों को नहीं पता होता है. 25 centimeters is like a 30 centimeter scale. 1 foot का जो scale बड़ा वाला scale होता है, that is 30 centimeters. So if you want to approximate how much is 25 centimeters, it is like that 1 foot scale. तो जो आपको चीज़ रखनी है, you have to keep at about that distance, approximate. 24 को 24, 5, 3, 6 हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. But you have to keep it around 25 centimeters. Now let's see what will happen if we don't keep the book at 25. If we keep if we keep the book at less than 25 centimeter from eye, उसको हम पास ले आए, ऐसे ले आए, तो क्या होता है, हमें डबल विजन आती है. दो अल्फाबेट्स, डबल विजन बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको ब्लर्ड भी बोल सकते हैं. साफ नहीं दिखाई देता, we can't see what is happening. If we keep the book to more than 25 centimeter, हमने 40 centimeter पे रख दीजिए, हमने वहाँ लगा के रख दी, तो क्या है, it will become too small for us to read. जो print size होता है कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड है ना, और वो प्रिंट साइज है और आप दूर को दीवार पर जाके टांग दोगे तो हमें दिखेगा नहीं दिखेगा. इफ वी कीप द बुक टू फार, मोर देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ऑब्वियसली द आई, हमारी आई से हमने उसको दीवार पे डाल दिया, देन व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट बी विजिबल ओनली, इट विल नॉट बी डबल विजन. Be careful, it is not double vision नहीं आएगा, it will not be readable. legible होता है, legible, या फिर अगर legible word नहीं पता है, it's not readable. तो अगर हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से बहुत दूर रख देते हैं, then it is not legible. We can't read it properly. Okay. So this is what is a normal
आई का नियर पॉइंट एन हुज वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द आई. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, ये दोनों चीज़ें क्यों हो रही हैं. इसके तो बहुत बार हम डायग्राम बना चुके हैं. वो 25 सेंटीमीटर पे रखो, वो अच्छे से कन्वर्ज कर देगा, रेटिना हो जाएगी. अब ये क्यों हो रहा है? ओहो, जगह नहीं छोड़ी मैंने, सॉरी, आज कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे. सपोज आई एम मेकिंग अ डायग्राम ऑफ दिस थिंग हियर. नाउ दिस इज माई आई. Okay, this was supposed to be the near point, which means this distance was supposed to be 25 centimeters. Okay, this distance was supposed to be 25 centimeters. Now what we do, we are trying to keep the book too close. हमने बुक यहाँ रख ली, हमने बुक अपने आई के और पास कर ली. लेंस तो जितना मोटा हो सकता है उतना ही होगा ही. ठीक है, हो जाएगा. दिस इज नॉर्मल आया, रिमेंबर. तो द लेंस विल बी फैट इनफ, उसमें लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. बट पास रखने से क्या हुआ, लेंस में प्रॉब्लम नहीं आई, ये रेज कुछ ज़्यादा ही डाइवर्जिंग हो गई. जितने आप पास करते जाओगे रेज और उतनी डाइवर्जिंग होती जाएंगी ना. नियर बाय ऑब्जेक्ट का रेज हमने क्या डिस्कस किया, दे आर डाइवर्जिंग. अब और पास ले आओ, will become more diverging. आप उसको और पास ले आओ, they'll become even more diverging. So what will happen is the rays have become very very divergent. बहुत difficult हो गई हैं, बहुत बदतमीज हो गई हैं the rays. They have become very divergent. They are fighting too much with each other or their parents or whatever. Now if they are fighting too much, they are going too far from each other, और लेंस तो बेचारा सेम है. Will it be able to make them meet? लेंस सेम है, यहाँ पे फाइटिंग बढ़ गई है, माई डाइवर्जेंस बढ़ गई है. वो यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं मिलवा पाएगा. It will not have that much of strength to make it meet here because they're already fighting too much here. This is the near point. They're fighting too much here, so वो नहीं मिल पाएगा. वो जितनी भी कोशिश कर ले वो यहाँ जाके मीट होएगी. तो अब क्या हमें रेटिना पे क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ? नहीं हुआ. तो क्लियर विजन मिली? नहीं मिली. दो विजन मिलेगी, डबल विजन मिलेगी. सो द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी रिटन हियर आर रेज आर टू डाइवर्जिंग. If I place the object very close to the eye, which is less than 25 centimeter, the rays are too diverging. Then what happens? The lens is not able to control them. They don't meet at retina. Same भी बात लिखते थक गई. शॉर्ट फॉर्म बना लूँ. They don't meet at retina, and the moment they don't meet at retina, you can see retina पे नहीं मिल रही है. ये क्या है, कहाँ intersection हुआ? The moment it is not intersecting here, this is not intersecting rays. The moment intersection नहीं हुआ, the vision becomes bad. The vision becomes blurred. Okay, so this was the explanation of why we can't see when we keep the things too close to our eye. Parents also say थोड़ा दूर रखो, आँखें खराब हो जाएंगी, ठीक से नहीं देखेगा. So this is what happens. बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो जाती है, वो बेचारा लेंस कंट्रोल ही नहीं कर पाता. कितना भी कोशिश करें यहाँ पे नहीं मीट होता, वो आगे चले जाते हैं. Okay, let's come to the third point. What happens when the book is kept too far? बहुत आसान है, बिल्कुल सेम चीज़ होएगी. I'll draw it here. I'm drawing the explanation of this third part. This third part, I'm drawing the explanation here. Okay? Don't mix up. This third part is the explanation of if book is more than 25 centimeter
फ्रॉम आई, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा. दिस इज द आई, this is the near point which is supposed to be 25 centimeter. Okay, now smart of us, हमने बुक को दूर रख दिया. We kept the book far from the eye. Recall, जब ऑब्जेक्ट दूर होते जाता है उसकी रेज क्या होती जाती है? लेस डाइवर्जिंग, लेस डाइवर्जिंग, लेस डाइवर्जिंग. जब ऑब्जेक्ट पास आते जाता है मोर डाइवर्जिंग. नाउ बिकॉज द बुक इज केप्ट हियर, द डाइवर्जेंस विल बी स्मॉल ओनली. देखो हल्का सा डाइवर्ज हो रही है बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम फार. द बुक इज वेरी फार फ्रॉम नाउ, द डाइवर्जेंस इज very small. But what is about the lens? The lens is the same. The lens is the same. It is that tight, fat lens. और इसको इतना काम करने को मिल नहीं रहा है. This lens is used to of making 20 rotis in half an hour. Okay? अब यहाँ पे उसको उतना काम ही नहीं दिया. 5 थोड़ी सी रोटीज बनानी है तो वो क्या करेगा? आधा घंटा लगाएगा. दिस इज अ फैट लेंस, द सेम फैट लेंस. दिस इज यूज्ड टू डूइंग वेरी हार्ड वर्क. दिस इज ऑल्सो द सेम लेंस, डज वेरी हार्ड वर्क, बट द वर्क इज ओनली नॉट देयर. इट्स सो लेस डाइवर्जिंग. काम ही नहीं है. जब लेस डाइवर्जिंग होगा, इसको कुछ करना ही नहीं है, तो वो तो फटाफट खत्म कर देगा काम. यहीं पे खत्म कर देगा काम. उसका कन्वर्जेंस यहीं खत्म हो जाएगा. फिर से वही हो गया. नाउ अगेन द कन्वर्जेंस इज नॉट ऑन रेटिना. It is before retina. See, it is before retina. This is the retina. The convergence is happening before retina and obviously not visible. जब उसके पहले ही कन्वर्ज हो गया तो हमें चीज नहीं दिखाई देगी. ओके, सो दिस इज व्हाई द नियर पॉइंट इज important. Understanding the near point and what happens when you keep the book far from the near point or near before the near point, then what happens and why it happens. The result is the same, हमें दिख नहीं रहा है, but the reasons are different. पास रख रहे तो मीट ही नहीं हो पा रही है, वो आगे जाके मीट हो रही है. बुक को हमने बहुत दूर रख दिया तो रेटिना तक पहुंची नहीं, पहले ही खत्म हो गई. Both the conditions, the visibility will be poor. Chalo, I think we'll keep it till this much today. Next time we'll start with the numericals of hypermetropia. And what was the other name for this, which I also keep going wrong? You please don't. It is hypermetropia is फार साइटेडनेस. हमें दूर की चीज़ अच्छे से दिखाई देती है, हमें बुक ढंग से नहीं दिखाई देती. ओके, चलो, लेट्स क्लोज इट टुडे. टेक केयर. सी इट अगेन एंड अगेन. जस्ट इन्फ्यूज इट स्लोली. डोंट बी इन अ हरी टू गो थ्रू द एपिसोड्स. इन्फ्यूज देम वेरी वेरी स्लोली. जब तक एक एपिसोड समझ नहीं आए आगे मत जाओ. Give it time. This is a topic where I will always tell you, give it time. All right? Thanks.